Yes, anyone, please let me know the recap what we have seen in last lecture. What the topic we have seen in last lecture? Electrochemical cells. Electrochemical cells. Very good, very good. So, is there any difficulty, doubt to anyone till the topic what we have seen? Yes. Is there any difficulty to anyone till the point what we have discussed here in the chapter? No, sir. Okay, thank you. Okay. ठीक है. Let's move on. Now. See, let's have a bit recap what we have seen or discussed here in the chapter. We are here with electrochemistry, and in our daily routine life, we are concerned with the concepts in electrochemistry. What we have seen here in the chapter, first section is dealing with fundamental definitions related with the chapter. That is, you can say what is conductance, what is electronic conductance, what is electrolytic conductance. Then what is conductance, what is conductivity? Conductance is by G, conductivity by K. What is resistance and what is resistivity, R and rho? What are the relation between them? And also we are saying that is what is molar conductivity. Then what is maximum molar conductivity? What is Polar's law? And how this degree of dissociation and molar conductivity are related with each other. That is also what we have seen here in the chapter. First half of the chapter. Middle part of this chapter consists of core concept of electrochemistry, where we are dealing with the electrochemical cell, which converts chemical energy into electrical energy and electrical energy into chemical energy. So that the conversion what we discuss here in the chapter. Also, we have seen electrochemical cell is classified into galvanic Daniel voltaic cell or electrolytic cell. Electrolytic cell is the cell which converts electrical energy into chemical one. Whereas galvanic cell is the cell which converts chemical energy into electrical one. So that is what we have seen here in the chapter. Going bit ahead, we have to discuss the construction, working, and related principles with this galvanic cell, Daniel cell, voltaic cell, or on the other hand, we have to discuss electrolytic cell. So in last lecture, we have discussed in detail electrolytic cell, its construction, its working, its principle, and we have seen the electrolysis of fused NaCl and electrolysis of aqueous NaCl. Right. So we have discussed electrolytic cell or electrolytic cell के अंदर हमने देखा, that is electrolysis. Electrolysis is the very important principle in electrolytic cell. सबसे पहले electrolytic cell converts electrical energy into chemical energy. And what is electrolysis? Electrolysis is the process in which a non-spontaneous reaction is carried out by supplying external electric current. तो electrolytic cell के अंदर हम बाहर से external current inputs देते हैं और उससे non-spontaneous reaction carry out करते हैं. तो कल last lecture में हमने देखा था कि suppose this is the container, इस container के अंदर हमने दो electrode put किए थे. So this is the graphite rod, this is another graphite rod, and this rod is connected to battery. So this is the battery. This is negative terminal and this is positive terminal. Negative terminal is called as your cathode and positive terminal is called as your anode. Okay, and here is the substance what we are taking. Okay, now पहली बार हमने लिया था fused NaCl और दूसरी बार हमने लिया था उसके अंदर aqueous NaCl. Okay, fused NaCl and aqueous NaCl. अभी हम जब फ्यूज्ड NaCl लेते हैं तो फ्यूज्ड NaCl लेते समय हमने देखा था कि एनोड पे क्या तैयार होता है. So when we do the fused NaCl, एनोड पे मतलब here it produces Cl2 तैयार होता है. और when we talk about the cathode पे क्या तैयार होता है तो सोडियम डिपॉजिट होता है. When we have this fused NaCl, so we have seen in last lecture
when we have the fused NaCl, then when electrolysis of fused NaCl is carried out, chlorine, this has Na plus and you can say Cl minus. Cl minus move to this and sodium move to this one. ये हमने देखा. And जिसके चलते सॉरी ये इस तरीके से क्लोरीन एनोड पे लिबरेट होता है, बिकॉज नेगेटिव होने के कारण ये पॉजिटिव की तरफ चला जाता है और सोडियम पॉजिटिव होने के कारण नेगेटिव की तरफ चला जाता है. यहाँ पे सोडियम डिपॉजिट होता है और यहाँ पे क्लोरीन लिबरेट होता है फ्यूज्ड NaCl. और एक्वियस NaCl के केस में उसके अंदर NaCl तो होता है, एट द सेम टाइम वाटर होता है, H2O भी होता है एक्वियस होने के कारण. एक्वियस सॉल्यूशन मतलब वाटर सॉल्यूशन. NaCl को पानी में पुट करना है और उसका इलेक्ट्रोलिसिस कंडक्ट करना है, मतलब इसी तरीके से प्रोसेस करना है. उस टाइम हमने क्या देखा कि इस तरफ तो क्लोरीन ही लिबरेट होता है एनोड पे, लेकिन हम जब कैथोड की बात करेंगे तो कैथोड पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है. सो दिस इज द बिग डिफरेंस. बहुत बार बच्चे ये डिफरेंस भूल जाते हैं और जिसके चलते हम लोग कहीं ना कहीं गलत आंसर देते हैं. क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना है, एग्जाम में पूछा जाएगा डिस्कस द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl. फ्यूज्ड NaCl क्या होता है मैंने बताया कि सोडियम क्लोराइड दिया जाता है, उसे थोड़ा सा हीट किया जाता है, वो मोल्टन स्टेट में चला जाता है, उसे कहा जाता है फ्यूज्ड NaCl. ओके, प्योर NaCl होता है. और व्हेन वी टॉक अबाउट एक्वियस NaCl, तो इस केस में क्या होता है कि NaCl पानी में पुट किया जाता है और उसका सॉल्यूशन बनाया जाता है, उस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कैरी किया जाता है. यहाँ पे प्योर NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कैरी किया जाता है, व्हिच इज इन बिट मोल्टन स्टेट, और यहाँ पे NaCl को पानी में डिसॉल्व करके उसे एक्वियस सॉल्यूशन कहा जाता है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस कंडक्ट किया जाता है. अगर हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एनोड पे क्लोरीन और यहाँ पे सोडियम डिपॉजिट होता है कैथोड पे, और हम इसका करेंगे तो एनोड पे क्लोरीन ही तैयार होता है, लेकिन कैथोड पे हाइड्रोजन लिबरेट होता है. सो टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड. एंड उसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है कि हाई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस हाइड्रोजन एज कंपेयर टू सोडियम. सो इस कारण से इसके अंदर सोडियम भी है और हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने के कारण हाइड्रोजन पहले निकल जाता है और फिर बाद में सोडियम निकल आएगा. सो दिस रिएक्शन अकर्स, दैट इज व्हाट वी आर सीइंग हियर. तो हो रहा क्या है, यहाँ पे क्लोरीन लिबरेट हो रहा है एनोड पे और यहाँ पे सोडियम यहाँ पे डिपॉजिट होता है. ओके, सोडियम डिपॉजिट होता है. अभी देखिएगा, इस तरीके से हम किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस कैरी कर सकते हैं. और जब इलेक्ट्रोलिसिस कैरी करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज मेटल और आयंस डिपॉजिट होंगे और यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज लिबरेट होंगे. नाउ ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कितने समय तक हम लोग कर सकते हैं और कितने समय इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद कितनी क्वांटिटी उसकी डिपॉजिट हो जाएगी, दैट इज यू कैन से क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज द नेक्स्ट टॉपिक व्हाट वी विल डिस्कस हियर. मतलब अगर हम लोग 1 मिनट के लिए इस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कितना सोडियम 1 मिनट में यहाँ पे डिपॉजिट होगा और कितना क्लोरीन यहाँ पे लिबरेट होगा. या फिर अगर इसकी बात करते हैं हम लोग तो कितना क्लोरीन 1 मिनट में यहाँ पे लिबरेट होगा और कितना हाइड्रोजन यहाँ पे 1 मिनट में लिबरेट होगा. दिस इज कॉल्ड यू कैन से क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दिस वन. ठीक है. सो अभी हमें जो डिस्कस करना है दैट इज नथिंग बट द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दिस थ्योरी, ये हमें यहाँ पे डिस्कस करना है. क्लियर विद दिस? सो लेट्स मूव टू द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दिस थ्योरी, ये हमें वहां पे डिस्कस करना है. ठीक है. सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, let's move. Okay. Okay, we have to discuss here quantitative aspect of this one. Now when we talk about this one, number one is nothing but the amount of electric charge. Amount of electric charge. Amount of electric charge कितना होगा? So that is you can say Q is equal to I into T. So this is I into T. So this is what we can say. सबसे पहला होती हम उस सेल में से कितना इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग सप्लाई कर पा रहे हैं, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग सप्लाई करते हैं, दैट्स इज गिवन बाय चार्ज दैट इज इन कूलम. सो this is Q represent the coulomb. Amount of electric charge is represented in coulomb, and coulomb is the product of current in ampere and the time in second. इसके अंदर Q represent, that is you can say coulomb, and I represent, that is you can say current in ampere, and T represents time in seconds. So these are the three major quantities what we have here. So
किसी भी सब्सटेंस में से मतलब जैसा हमने देखा था कि सपोज दिस इज द सेल और इस सेल के अंदर ये इलेक्ट्रोड्स है, दो इलेक्ट्रोड्स है एंड दे आर कनेक्टेड टू बैटरी, यहाँ पे बैटरी है। ओके, सो इसमें से कितना इलेक्ट्रिक चार्ज हमने यहाँ से पास किया, सॉल्यूशन से पास किया, इस इलेक्ट्रोलाइट से पास किया, दैट मैटर्स अ लॉट. So the amount of electric charge passed through the electrolyte is calculated by this, that is Coulomb. Amount of electric charge is measured in Coulomb, and Coulomb is equal to I into T. That is the current in ampere and time in seconds. Compulsory current in ampere, time in seconds, and the product is nothing but the Coulomb. That represents the amount of electric charge what we are going to pass through the electrolyte solution. Got it now? So this is the very important things that how much we pass through it. Now, दूसरी चीज यहाँ पे आ जाती है, that is you can say total amount of charge is given by Q. अब इसके अंदर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, that is you can say 1 mole of electron, 1 mole of electron, 1 mole of electron has the charge 96500 coulomb. देखिएगा, which is also called as 1 farad. 1 farad. इसका एक खासियत है कि 1 mole of electron, अभी एक मोल क्वांटिटी जानते हो तो 1 मोल कितना होता है हम जितना जानते हैं, so that is 1 mole is nothing but 6.022 into 10 raised to 23, इतना होता है. Now 1 electron has the charge 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. हम जब इसमें से एक्चुअली हम जब चार्ज सप्लाई करते हैं तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं. हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन क्लोरीन यहाँ पे लूज करता है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर चले जाते हैं, तो एक्चुअली करंट फ्लो होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं. और हमने एकदम स्टार्टिंग में देखा था कंडक्टेंस इज नथिंग बट द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. सो इफ चार्ज ट्रांसफर occur with help of electrons, that is called as electronic conductance, and whenever charge transfer occurs with the help of ions, that is called as electrolytic conductance. 100% here we are dealing with the electrolytic conductance, but इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है. अभी कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लो हुए, that matters. And this is nothing but the represented by 1 mole. Mole is the right unit in the chemistry. So 1 mole is nothing but 6.02 into 10 raised to 23 electrons. अभी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. So हम जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन पास करते हैं तो हम कितने इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb करेंगे तो it comes to 96500 coulomb, इतना आ जाता है. That is also called as 1 farad. अब देखिएगा, हम इसमें से अगर 1 mole of electron पास करते हैं, 1 mole of electron, that is 6.02 10 raised to 23 electrons, तो हम कितना चार्ज पास कर रहे हैं, 96500 coulomb. Averagely this figure is taken because for different substances this figure is totally a bit different, थोड़ा सा difference आता है. So on an average this figure is taken as 96500 coulomb, which is called as 1 farad. So this is nothing but the Q, that is you can say yeah. So total charge equal to Q upon 96500 coulomb. We आता है मतलब how much amount of charge we have passed. So Q is the total charge what we have passed upon 96500. The reason behind that 1 mole of electron has 96500 coulomb. Then total Q charge is nothing but the 96500 coulomb. एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकाला जाता है. So हमने इसमें से कितना चार्ज हमने पास किया है, so total charge divided by 96500 coulomb, इससे हम लोग निकाल सकते हैं, that is how much charge we have passed through the solution. Q कैसे निकाला जाएगा, तो Q into I. इधर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, instead of Q I can put I into T upon 96500 coulomb. Okay, 96500 coulomb, इधर आ जाता है. And this coulomb is nothing but the 1 farad. ये भी याद रखिएगा. The charge present on 1 mole of electron is considered to be 96500 coulomb. That is also called as 1 farad. तो हमने इसमें से जब 1 mole of electron पास किए, इसका मतलब होता है 96500 coulomb electricity पास. उसका मतलब होता है 1 farad electricity पास की. This is the unit in farad. समझ रहे हैं आप लोग? So in that sense, the total charge passed through the solution is Q upon 96500 coulomb. That is what we get here. ये हम लोग को इसके अंदर मिल जाता है कि how much total charge what we have passed over this. Okay, so मतलब number of moles of actually electrons what we have passed. So that is total charge separator. Total charge यहाँ पे है. That is number of moles of electron.
मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने पास की, क्योंकि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो 96500 कूलम है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यू अगर चार्ज पास होते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्यू अपॉन 96500 कूलम, इतना हम लोगों को मिल जाता है। अभी तीसरी बात आती है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। सो उसके पहले एक आता है कॉन्सेप्ट, दैट इज मोल रेशियो। मोल रेशियो करके एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, मोल रेशियो, इसकी एक डेफिनेशन है। मोल रेशियो क्या होता है, तो मोल रेशियो का एक डेफिनेशन ऐसा है, फॉर्मूला ऐसा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म in a half reaction upon total number of electrons required in a half reaction मोल रेशियो इस तरीके से है। अभी ये मोल रेशियो क्या होता है ये पहला समझिएगा आप लोग। अभी जैसे मैंने बताया कि इस इलेक्ट्रोड पे जो होता है वो हाफ रिएक्शन होता है, इस इलेक्ट्रोड जो होता है वो हाफ अनदर हाफ रिएक्शन होता है। वो कैसे होते देखिएगा। तो पहला रिएक्शन ऐसा होता है कि सोडियम which is a plus gets one electron to form Na. This is a half reaction and this is, you can say, reduction reaction. Or here Cl, twice Cl gives you Cl2 plus 2 electrons are left. This is oxidation. So reduction is a half reaction and oxidation is a half reaction. तो अभी इस रिएक्शन को देखते हैं तो मोल रेशियो क्या कहता है, देखिए मोल रेशियो ऑफ दिस रिएक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन हाफ रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कितने हैं, इसके 1 है। तो इसका मोल रेशियो देखिए, इस रिएक्शन का मोल रेशियो, इस रिएक्शन का मोल रेशियो क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन अ हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो चुके हैं वो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, जो हमने लिखा 1 मोल, जो यहाँ पे दिखते हैं 1 मोल अपॉन number of moles of electrons required. Number of moles of electrons required is this reaction के अंदर 1 electron, so is 1, so that's why this will be 1. So mole ratio for this sodium is nothing but the 1 by 1 is 1. The reason behind that, number of moles of product formed is 1 mole and number of electrons required is 1, so that's why mole ratio is 1. So this is the formula जो हमें learn करना पड़ेगा। Mole ratio is the number of moles of product formed in a half reaction divided by the number of moles of electrons required in a half reaction, and that is nothing but this one. इस रिएक्शन की अगर बात करें तो इस रिएक्शन में देखिएगा, इस रिएक्शन में मोल रेशियो कितना आएगा। So इस प्रोडक्ट फॉर्म इज this is the main product and this is 1 ion and number of electrons required मतलब भले ही वो ऑक्सीडेशन साइड पे हो फिर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो 2 है। So this is, you can say, 0.5, 1/2 इसके अंदर मिलेगा। यही हम लोग एल्यूमिनियम की बात करते हैं, तो एल्यूमिनियम के केस में क्या होगा, एल्यूमिनियम क्या होता है, +3 होता है, इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो फॉर्म एल्यूमिनियम। तो इस रिएक्शन का मोल रेशियो क्या रहेगा, दैट इज मोल रेशियो इज इक्वल टू प्रोडक्ट फॉर्म इज 1 मोल एंड इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड इज 3, 1/3 इज अ मोल रेशियो, 1/3 इज अ मोल रेशियो। सो दिस इज व्हाट वी आर। तो थर्ड फैक्टर है मोल रेशियो, जिसका फॉर्मूला याद रखना है आपको, थोड़ा प्रिपेयर करके लर्न करके, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन हाफ रिएक्शन divided by total number of moles of electrons required in a half reaction is called as, you can say, mole ratio. अभी mole ratio क्यों जरूरी है? When we calculate the number of moles of product, we need to multiply this equation with number of moles, mole ratio. So quantitative aspects के अंदर अगर हमें number of moles of product निकालनी, देखिए, so 1 2 3, अभी फोर्थ की बात करते हैं, that is, you can say, number of moles of product, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म अगर निकालने हैं तो ये ऐसा आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज इक्वल टू, दिस इज Q अपॉन 96500 कूलम इनटू मोल रेशियो, ऐसा आ जाता है। सो ये फॉर्मूला बनता है। सो होप सो यू आर गेटिंग इट वेल। सबसे पहले देखा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स के अंदर कि हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वी हैव पास, वो कैसे निकाला जाता है, तो I into T से निकाला जाता है। देन हाउ मच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास, तो ये इस तरह से निकाला जाता है, Q अपॉन 96500 कूलम। उसके पीछे रीजन ये है कि 1 mole of electron has the charge 96500 coulomb, so Q coulomb has n number of moles of electron, so number of moles of electron is equal to Q upon 96500 coulomb, ये आ जाता है। मोल रेशियो अलग फॉर्मूला है, जो इसके अंदर हाफ रिएक्शन एनोड पे, हाफ रिएक्शन कैथोड पे होता है, और इसलिए वो इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, जिसके अंदर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन हाफ रिएक्शन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड इन हाफ रिएक्शन, जिसके मैंने एग्जांपल बता दिए थे, यहाँ पर भी है, वहां पे बताते हैं। अभी क्या है कि how much number of moles of product form in a reaction, how much number of moles of product form in a reaction, ये अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता है, इस इक्वेशन को मोल रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। We got number of moles of product.
अभी हमें अगर वेट निकालना है, फिफ्थ पार्ट, दैट इज वेट इन ग्राम ऑफ प्रोडक्ट, वेट इन ग्राम ऑफ द प्रोडक्ट निकालना है, तो हमें आएगा Q अपॉन 96500 कूलम इनटू मोल रेशियो इनटू मोलिकुलर वेट या फिर मोलर मास, molecular weight into molar mass, इस तरीके से फॉर्मूला आ जाता है। तो फाइनली we got a weight of the substance in gram, weight of the substance in gram। आप देखिएगा यहाँ पे क्लोरीन लिबरेट होता है, क्लोरीन लिबरेट, यहाँ पे सोडियम डिपॉजिट होता है, सोडियम डिपॉजिट होता है। How much weight of sodium is deposited? How much weight of sodium is deposited? That is, you can say W. W can be calculated by using this formula. So this is the formula by which we can calculate the weight. अगर नंबर ऑफ मोल्स करने तो ये फॉर्मूला है उसके लिए। सो ये फॉर्मूला हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, फाइनली यूज करेंगे। तो किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में कितना सब्सटेंस का वेट लिबरेट हुआ, अगर हमें क्लोरीन का निकालना है तो वी कैन कैलकुलेट द वेट ऑफ क्लोरीन, अगर हमें सोडियम का निकालना है तो वी कैन कैलकुलेट द वेट ऑफ सोडियम। हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पास, मतलब Q का फॉर्मूला क्या होता है, I into T, है ना। सो ये फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा, मैं उसका फाइनल फॉर्म यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज वेट डिपॉजिटेड W इज इक्वल टू I into T अपॉन 96500 into मोल रेशियो into molecular weight, molecular weight is capital M, capital M। ये हमने, अब देखिए इस फॉर्मूले के अंदर हम वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट निकाल सकते हैं। क्लोरीन की बात करेंगे तो वेट ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू हाउ मच करंट इज पास टू द इलेक्ट्रोलाइट फॉर हाउ मच टाइम इट इज पास डिवाइड बाय 96500 कूलम इनटू मोल रेशियो। मोल रेशियो क्लोरीन का आएगा, क्लोरीन का मोल रेशियो काफी दिया था कि अगर Cl2 होता है तो 1/1 आ पाएगा, Cl होता है तो 1/1 आएगा, सो मोल रेशियो आएगा। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरीन जो होता है वो यहाँ पे रखेंगे, तो वी कैन कैलकुलेट द वेट ऑफ क्लोरीन लिबरेटेड व्हेन दिस पर्टिकुलर करंट इज पास फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम। तो हमें करंट पता है और टाइम पता है, तो हम उससे टोटल चार्ज निकाल सकते हैं, और also we can calculate weight of substance deposited in this process. This is the way. अब इसका एप्लीकेशन में बताना चाहूंगा कि व्हाट इज डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस वन। हम बोलेंगे कि यार ये सिर्फ ऐसे ही पढ़ रहे हैं हम लोग, नो, दिस हैज सम सर्टेन एप्लीकेशंस इन आवर डेली रूटीन लाइफ। सबसे पहली बात आती है कि शायद आपने गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी के बारे में सुना होगा, आप में से कुछ बच्चे हैं, बंधु हैं जिन्होंने गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी के बारे में सुना होगा या फिर जानते होंगे कि देयर इज अ गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी होता है। तो अभी ये गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी क्या होता है, आप एक बार समझ लेंगे। तो होता क्या है कि ज्वेलरी किसी ना किसी दूसरे मेटल की बनाई जाती है और उसे गोल्ड के सॉल्यूशन में डीप किया जाता है कुछ पर्टिकुलर समय में उसको कैथोड बना के उसके अंदर डीप किया जाता है। जैसे उसका कैथोड बनाएंगे, गोल्ड के पार्टिकल उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, गोल्ड के पार्टिकल उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। एक पर्टिकुलर समय के लिए करेंगे तो एक यूनिफॉर्म लेयर उसके ऊपर आ जाएगा। सपोज दिस इज द एक हम किसी मेटल का चेन है मानो सर, और उससे हम लोग गोल्ड के सॉल्यूशन में डिपॉजिट करते हैं, तो गोल्ड इसके ऊपर डिपॉजिट होता है यूनिफॉर्म, एक एक एटम यहाँ पे डिपॉजिट होगा, एक एक एटम डिपॉजिट होगा, तो इट विल बी टोटली गोल्ड प्लेटेड। तो गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, प्लैटिनम प्लेटेड ज्वेलरी बनाने के लिए उसका यूज किया जाता है। आज की तारीख में हम लोग मेटालिक पेंट कहते हैं, काफी सारे चीजें हम लोग यूज करते हैं जिसमें मेटालिक पेंट होता है, जैसे टू व्हीलर की बात करते हैं, महंगी कार की बात करते हैं, या हम लोग कई सारे ब्रेसलेट यूज करते हैं, या फिर हम घर के अंदर कई सारी चीजें, या हमारे स्पेक्ट का फ्रेम होता है जो मेटालिक फ्रेम होता है, तो वहां पे मेटल उसके ऊपर डिपॉजिट किया जाता है बाय डिपिंग इट इनटू इट्स सॉल्यूशन एंड मेकिंग इट अ कैथोड। तो मेटल यहाँ पे डिपॉजिट होता है। हाउ मच वेट इज डिपॉजिटेड इन अ गिवन टाइम वी कैन कैलकुलेट बाय दिस फॉर्मूला। सो electroplating, deposition of one metal on the surface of another metal, is a direct application of this electrolysis phenomena, what we got here in daily routine life. Clear with this? So this is the quantitative aspects of this electrolysis. So now this first cell is done over here. What is the first cell? Electrolytic cell. We are here with electrochemical cell. और electrochemical cell के दो टाइप होते हैं, एक होता है electrolytic cell और दूसरा होता है एक कैन से galvanic cell। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में हमने क्या-क्या डिस्कस किया, दैट इज यू कैन से कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दैट इज व्हाट वी हैव सीन ओवर हियर। क्लियर विद दिस? एंड उसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स।
उसी के अंदर हमने फ्यूज इनिशियल का इलेक्ट्रोलिसिस देखा, एक्वियस इनिशियल का भी हमने इलेक्ट्रोलिसिस डिस्कस कर लिया. नाउ लेट्स बिट मूव टुवर्ड्स गैल्वेनिक सेल. ओके, सो गैल्वेनिक सेल क्या होता है ये हमें डिस्कस करना है. लेट्स मूव टू द गैल्वेनिक सेल. Second cell, we are with galvanic, Daniel, or voltaic cell. Okay, अब देखिएगा, these are the three different scientists. These are the three different scientists who made this cell. That is, you can say, galvanic cell, Daniel cell, voltaic cell. Galvanic is the different scientist, Daniel is different scientist, and voltaic is different scientist. And these scientists made a different cell with a different construction, but the principle of the cell is a similar. तीनों का प्रिंसिपल एक ही था, और प्रिंसिपल मैटर करते हैं. कंस्ट्रक्शन किस टाइप का वो उतना मैटर नहीं करता जितना जैसे कि आज की तारीख में हम देखते हैं. मार्केट में प्राइमरी बैटरीज मतलब सेल आते हैं. देयर इज एवरीडे सेल, एवर रेडी सेल, देयर इज आई थिंक सो ड्यूरा सेल, है ना. ऐसे कई सारे डिफरेंट कंपनियां होती है. तो उनका भले ही अंदर सेल का प्रिंसिपल सेम होगा, केमिकल्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन बनाने वाली कंपनी अलग होती है. अभी थोड़ा बहुत डिफरेंस करते हैं बिकॉज द रीजन दैट देयर इज अ पेटेंट नेम कॉन्सेप्ट. तो हर कंपनी अपना अलग पेटेंट रजिस्टर करती है, उसके आधार पर वो मैन्युफैक्चरिंग करती है डिफरेंट डिफरेंट सेल्स का. सो लेकिन केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू प्रिंसिपल ऑलमोस्ट सारे सेल्स का एक ही होता है. एंड दैट मैटर्स बिकॉज वी आर गिवन फंडामेंटल केमिस्ट्री. सो गैल्वेनिक डैनियल वोल्टैक सेल, इस सेल के अंदर भी हम देखेंगे. नंबर 1 विल डिस्कस कंस्ट्रक्शन. Number 2, we'll discuss working. Number 3, we'll discuss uses or properties of PV. So again, taking a lot of related properties, things what we discuss here for this galvanic Daniel voltaic cell. अब देखिएगा, यहाँ पर जाता है that is nothing but zinc copper cell. कौन सा परसेंट देखते हैं हम लोग? That is you can say zinc copper cell की बात करते हैं. Zinc copper cell. So see, this is the first container. This is another container. Second container. First container is filled with a zinc sulfate solution. इसके अंदर क्या भरा हुआ है? This is nothing but the zinc sulfate solution, and this is filled with a copper sulfate solution. CuSO4 copper sulfate solution. First container consists of zinc sulfate, second consists of copper sulfate solution. इसके अंदर zinc rod is dipped or zinc plate is dipped. इसके अंदर copper plate is dipped. So this is copper plate and this is you can say zinc plate. Yeah. And they are connected to external circuits, say galvanometer or battery. So we can have here galvanometer like instrument. Like this. This is a galvanometer instrument जिसको यहाँ पे connect किया जाता है like this one. And here is the instrument which is called as a salt bridge, which connect both of the solutions. Both of the solutions को connect करता है like this. This is you can say. Like this. So this is a salt bridge. So salt bridge दोनों solution की construction करता है. So इसके अंदर see, this is the container. First container, second container. First container मतलब we are talking about the construction of this galvanic Daniel voltaic cell. तीनों में से कोई भी सेल पूछा जाएगा तो यही construction है. Container first is filled with zinc sulfate solution. Container second is filled with copper sulfate solution. A zinc rod is dipped in a zinc sulfate solution. Copper rod is dipped in copper sulfate solution. Wo metal उसका solution, zinc metal उसका solution. Plate, pure copper plate है, zinc plate है, pure copper plate. They are connected to the galvanometer, and this is the separate instrument called as a salt bridge. ये जो instrument है, this is nothing but the salt bridge. This is called as a salt bridge. यहाँ पे जगह नहीं है. Salt bridge. Salt bridge. Salt bridge. ये bridge के जैसा काम करता है. It connects both of the. जिस तरीके से bridge river के ऊपर होता है, जो दो किनारों को जोड़ता है. मतलब ब्रिज के ऊपर से हम एक किनारे से दूसरे किनारे जा सकते हैं रिवर. उसी तरीके से ये ब्रिज है जो इस सॉल्यूशन को और इस सॉल्यूशन को कनेक्ट करता है.
दोनों सॉल्यूशन को मिक्स होने से अवॉइड करता है, लेकिन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक करंट और दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट मेंटेन करता है. सो दैट इज व्हाट वी कैन सी हियर सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज के बारे में स्पेशल हमें डिस्कस करना है, डिटेल में डिस्कस करना है. अभी हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सेल दैट इज यू कैन से गैल्वेनिक कैरियर वोल्टाइक सेल. सो दैट्स ऑल फॉर द कंस्ट्रक्शन. तो कंस्ट्रक्शन के अंदर इतनी सारी चीजें आती है. वंस अगेन कंस्ट्रक्शन में क्या आता है? देयर आर टू सेपरेट कंटेनर्स. First container is filled with zinc sulfate solution in which a zinc rod is dipped. Another container consists of copper sulfate solution in which copper rod is dipped. Then they are connected to the galvanometer या फिर bulb को भी कनेक्ट किया जा सकता है, galvanometer को कनेक्ट किया जा सकता है. And both solutions are connected with a salt bridge instrument. Salt bridge क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे बाद में, but that is what we are. So this is the construction of this galvanic, Daniel or voltaic cell. Done. Now when we comes to the working, whenever the circuit is completed, इस सेल के अंदर जब सर्किट कंप्लीट होता है तो what happens, that is what we discuss here. This cell starts working when the circuit is completed. So while working, now working में क्या होता है ये हमें डिस्कस करना है. What happens while working? Two reaction happens. Okay. So this is the zinc. Zinc has the tendency to lose electrons. तो अब देखिए कि यहाँ पे रिएक्शन क्या होता है. ये जो जिंक मेटल है, zinc metal goes into the solution to form Zn++. Zinc metal goes into the solution to form Zn++. Zn loses electron to form Zn++ plus 2 electrons are lost, and this process is called as oxidation. This process is called as oxidation process. ठीक है. On the other hand, this copper sulfate dissociate to produce Cu++ and SO4 minus. This copper sulfate dissociate to produce Cu++ plus SO4 minus minus. We are talking about zinc and copper. So copper has a tendency to dissociate like CO plus plus SO4 minus. Zinc goes into the solution keeping behind the electron. यहाँ पे these electrons travel through external circuit comes over here. Electron यहाँ पे आ जाते हैं और these electrons are received by copper to form Cu plus plus receive these two electrons to form Cu, and this is the reduction reaction. This is the reduction reaction. Big level here. तो यहाँ पे reduction होता है और यहाँ पे oxidation होता है. Loss of electron is called as oxidation and gain of electron is called as reduction. इसके अंदर due to this electron, this plate becomes negatively charged and this plate becomes positively charged. This is called as your anode and this is called as your cathode. Okay, confusion होगा थोड़ा सा. पहले सेल में कैथोड था नेगेटिवली चार्ज और इस सेल में कैथोड है पॉजिटिवली चार्ज. The reason behind that, cathode anode doesn't depend upon positive or negative charge. Cathode anode depends upon the reaction, which reaction occurs over there. Basically, cathode is the electrode where the reduction reaction has to occur. So cathode is the electrode where reduction occurs, and anode is the electrode where oxidation occurs. तो जहां पे ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है और जहां पे रिडक्शन होता है वो हमेशा कैथोड होता है. तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है. Cu++ receives this electron to form Cu. Reduction होता है, and that's why this is called as cathode. ये याद रखिएगा. The basic or fundamental definition for this anode and cathode is nothing but the electrode where oxidation takes place is called as anode, and the electrode where reduction takes place is called as cathode. Anode, cathode is not decided by signs. They are decided by the reaction. Cathode is the electrode where reduction has to happen, and anode is the electrode where oxidation has to happen. So in that sense, this is the electrode where the zinc goes into the solution keeping behind the electrons, and that's why this process is oxidation, which happens at anode. But due to this electron, this metal plate becomes negative charge. Electron travels to external circuit and this plate becomes positive charge. ये plate negative होता है तो ये plate positive होना ही होना है. So positive is a cathode, negative is the anode. ये कौन से सेल में है? Galvanic cell में. Electrolytic cell में अलग notation. Electrolytic cell में cathode negative है, anode positive है. क्योंकि प्रोसेस तो वही होता है. कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होना है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होना है. सो दिस टू हाफ रिएक्शन हैपेंस एट एनोड एंड कैथोड. ओवरऑल रिएक्शंस की बात करते हैं. ओवरऑल रिएक्शन में दिस गोस फॉर ऑक्सीडेशन. सो Zn gives you Zn++ plus 2 electrons are left, and this is nothing but oxidation. Overall reaction is Cu++ receives these 2 electrons to form Cu, and this is nothing but the reduction reaction. And the overall reaction is electrons got cancelled. Zn plus Cu++ gives you Zn++ plus Cu, and this is redox reaction. So that is what we get here.
Also, you are easily understanding what is the overall reaction. Overall reaction is a combination of oxidation and reduction. The simultaneous oxidation reduction is called as a redox reaction. So यहाँ पे क्या हो रहा है? Zinc is going for the oxidation and copper is going for the reduction. And this overall reaction is called as a redox reaction. This is called as a redox reaction. So now that is what we get here. This is called as a working of this cell. This is called as a working of the Daniel cell. This is called as a working of this galvanic cell. Hope everyone got it. What is oxidation? What is reduction? And what is the working of this cell? तो galvanic cell के अंदर आता है construction, galvanic cell के अंदर आता है that is working. Construction के अंदर what we have done over here, and working के अंदर आता है what happens at anode, what happens at cathode, half reactions, and the overall reaction is oxidation reduction. By going through this reaction, ये reaction देखते समय आपको समझ में आएगा overall reaction में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहीं दिखाई दे रहे, तो reactor में zinc है, copper plus plus है, और product में Zn plus plus and copper है. तो here you can say zinc plus Cu plus plus, and here zinc plus plus Cu. रिएक्टर में चार्ज कॉपर के ऊपर है और प्रोडक्ट में चार्ज जिंक के ऊपर है. देखिए रिएक्टर में चार्ज कॉपर के ऊपर है, प्रोडक्ट में चार्ज जिंक के ऊपर है. तो चार्ज गॉट ट्रांसफर फ्रॉम कॉपर टू जिंक. जो कॉपर के ऊपर चार्ज था वो जिंक के ऊपर ट्रांसफर होता है. एंड दिस इज नथिंग बट द चार्ज ट्रांसफर. एज पर आवर डेफिनेशन, कंडक्टेंस इज द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. हियर इज द चार्ज ट्रांसफर हैपेंस फ्रॉम कॉपर टू जिंक. चार्ज ट्रांसफर होता है मे बी बाय एक्सटर्नल सर्किट और इंटरनल सर्किट. दैट इज व्हाट वी कैन से. क्लियर विद दिस? So this is what we are here, galvanic Daniel or voltaic cell. So this is what we can say here. So this is accordingly the construction and working of Daniel cell. That the users will see it in tomorrow's lecture. Till then, bye bye. Thank you very much. See you tomorrow then.